and you can see behind me. This is really scary. The situation is escalating. Some of the police personnel. Hey! ये कहाँ से रॉक attacking the protest? Sir, media, sir, media. It's 12:50 in the afternoon, and we are assessing the mood of the protest. I'll take you to Jantar Mantar. Right now, I'm standing on the Janpat Lane Road. Let's see how the protest is unfolding right now. Some of While the sloganeering is continuing, some of the protesters seem to be leaving also. This is what Jantar Mantar looks like on a Monday morning. This is 20th of July and crowd is only swelling. You can see right behind me the stage is there, and protesters are telling me that Cockroach Janata Party president, founder Abhijit Deepke and his other associates have not started their march yet to parliament. But despite this being an extremely humid day, the crowd has not shied away from coming out in large numbers. This crowd has not shied away in coming out in large numbers despite the advisory issued by Delhi police, despite the security measures deployed to prevent them from moving towards parliament. Just yesterday, Sonam Wangchuk, who was on his 21st day of hunger strike, released fresh 3 demands. He said that he will discontinue his hunger strike if one of those 3 demands are met. Importantly, none of these 3 demands ask for Dharmendra Pradhan's removal. Now the question is whether Sonam Wangchuk has gone back on his demands or has he toned down his demands, because none of the 3 demands, as I said, explicitly demand Dharmendra Pradhan's resignation. Bhai, will you like to speak to us? सोनम वांगचुक जी के बारे में बात करना है, क्या राय है आपकी? बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं और एक अच्छे एजुकेशनिस्ट भी हैं। जैसा वो काम कर रहे हैं वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। वो कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है कि आ गए हैं लड़ रहे हैं, वो हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और उनके लिए सपोर्ट करना तो बनता है। बट सोनम वांगचुक जी ने अभी जो अपनी फ्रेश गाइडलाइंस, फ्रेश कंडीशंस इशू की हैं, उनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार बहुत ही बेशर्म हो चुकी है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 1 मरे 20 मरे, कोई भूख से मरे या ना मरे। अगर उनको फर्क ही पड़ता तो अभी तक तो आ जाता। एटलीस्ट कोई ना कोई एक गवर्नमेंट से एक बंदा भेज सकते हैं, खुद आके प्रोटेस्ट तोड़वा सकते थे, इतना गलियस होता ही नहीं। लेकिन उनको चाहिए, उनको प्रॉब्लम है कि ये मरने दो इनको, वो चाहते हैं। और उनने इसलिए ही दिया होगा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे, जो उनकी गाइडलाइंस है उस पर चलेंगे, क्योंकि हम उनके सपोर्ट में आएंगे तो उनकी गाइडलाइंस तो फॉलो करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं इटावा यूपी। आप इटावा यूपी से? जी स्पेसिफिकली इस प्रोटेस्ट के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या मोटिवेट किया आपको इस प्रोटेस्ट में आने के लिए? सोनम वांगचुक जी की हंगर स्ट्राइक। जी। आप क्या करते हो? मैं अभी MA कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स से। जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि people from all across the country have come only specifically for this protest. It is escalating at Delhi's Jantar Mantar when protesters are planning to move towards parliament, but the police is not removing the barricades and they have been stopped. You can see the crowd is swelling towards that barricades and the clash seems to be erupting. We are seeing heated exchange between cops and protesters here. As you can see, they want permission to march towards parliament, but they don't seem to have the permission of the Delhi police, which has been deployed here. Sloganeering protest is intensifying. CJP founder Abhijit Deepke is perpetually urging the Delhi police to open these barricades, allow protesters to move towards parliament, even as the talks are being held with CJP representatives with JP Nadda. However, here you can see protesters are carrying placards, tricolors, and now a clash looks imminent between protesters and police personnel if the permission to march towards parliament is not granted. क्या हो रहा है यहाँ पे? तानाशाही हो रही है बस। आप लोगों गाली नहीं, क्या हुआ? अरे लाठी चला रहे हैं सब, लाठी चार्ज कर रहे हैं आप पे? बिल्कुल कर रहे, वो ऐसा मारे जैसे कोई परमिशन नहीं दे रहे। परमिशन नहीं दे रहे, वो वाला हाल कर रहे जैसे किसी क्रिमिनल के साथ करते हैं।
saying the volunteers are forming a human chain to avoid any kind of provocation from either of the side. While reports are there that police had started lathi charge, right now we can see the police is just not allowing protesters to move ahead. We are at the heart of the protest site. भाई ये चेन आप लोग किससे प्रोटेस्टर्स के साथ हैं? भाई आप बात की जरूरत नहीं लग गया आपको परमिशन नहीं है आगे जाने की, क्या हो रहा है? सर हमारा हक है पार्लियामेंट तक जाने का, ठीक है? ये लोग क्यों रोक रहे हैं? हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, गलत बात। अगर हम जा रहे हैं बच्चे, ये देखो कहाँ गया वो, अपने इनके खून निकल रहा है, लड़कों के खून निकल रहा है, ये गलत बात है। तो ये ह्यूमन चेन बनाने के पीछे क्या कारण है? ह्यूमन चेन सर देखो, वी आर स्टूडेंट्स है ना, अगर ये हम आगे जाएंगे इनको भावना मिलेगा गोलियां तक चलाने का। हम नहीं चाहते खून खराबा, क्यों? हमारा नुकसान है, इनका क्या नुकसान है? इनके पास वेस्ट है, इनके पास शील्ड है, हेलमेट है, हम नहीं देख रहे हो, आप लेडीज को भी नहीं देख रहे हो। आप लोग ये शर्म नहीं है कि महिलाएं उन्होंने डायरेक्ट छुट्टी साथ ही डंडा मारा है हमारे साथ। महिला तो उसके पीछे पूरे पीठ उसके खून से सनी है। ये लोग ऐसे करके हाथ पूरा कपड़ा करके घसीट रहे, उसका कपड़ा फटा है, रेलिंग के पास वो फंसी है। अगर न बचाते तो वो कांटे के अंदर चली जाती। इनको ये नहीं कि महिला और पुरुष, ये लोग सिर्फ बदतमीजी पे आमादा है। ये तानाशाही सरकार अब नहीं चलेगी। आपको परमिशन है जाने की? परमिशन ही तो नहीं दे रहे। एक्चुअली हम लोग खुद 3 दिन से प्रदर्शन के अंदर थे। आज बोल दिया गया था अगर जो भी जाएगा तो आप लोग लाठी खाओगे। वो लोग खुली धमकी दे रहे हैं सर। तो अभी क्या फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है? फ्यूचर प्लान क्या? धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें प्लीज। हम लोग ऐसे ही नहीं मेहनत कर रहे। हमारे देश का युवा यहाँ पर ऐसे नहीं चल रहा है। 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, लोग इस तरीके से परेशान है। आप तब भी नहीं कर रहे हो यार, अभी तक इस्तीफा नहीं बोलने को है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री होते, सबसे पहले आपको पद की नहीं, आपको युवाओं की जरूरत है। आपका पद 2 दिन के अंदर ये युवा खत्म कर देंगे। एक एक करके पुलिस वाले ने बहुत बुरा किया है। इनको किसने अधिकार दिया है लाठी चलाने के लिए? आप पूछिए इनसे। महिला को मारे, हाथ पे मारे, सर पे मारे, आप बताइए कैसे मार रहे हैं ये पुलिस वाले? चलिए पूछते हैं पहले पुलिस वाले से, आपको किसने अधिकार? आइए हम बात करते हैं पुलिस वालों से। पूछिए। सर एक्सक्यूज मी सर, आप परमिशन देंगे क्या इनको, प्रोटेस्टर्स को? सर will you grant them permission to march towards parliament? Sir, they are accusing you of lathi charge. Have you charged lathi on them? सर ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने लाठी चार्ज किया है, ऐसा है क्या? वीडियो है हमारे पास में। आप पूछिए कि इनका नेम प्लेट क्यों नहीं है? इनका नाम क्यों? Even then, they are not authorized. They are not authorized. The authorized one is the back. Is at the back. इन्हें पीछे की सपोर्ट है। इन सबको हम कुछ कह नहीं सकते। इनकी लाठियां खा जरूर सकते हैं हमारे भाई सभी ये। ठीक है। What is the purpose of this human chain? Human chain to protect our beings. ठीक है। हम सबको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इन्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। इसीलिए If they don't grant you permission, what is your next course of action? we'll sit here till the next section. We are just doing the peaceful protest. We just want to do this thing. ये प्रशासन है तो ये नेम टैग क्यों नहीं लगा रखा है? बताइए, किसी का है नेम टैग? क्यों है? ये प्रशासन है, बताओ। ये प्रशासन है, ये प्रशासन है। इनको प्रशासन बोलोगे, इनको बीटी बोलोगे, बताओ। नहीं होगा, बताओ ना, ये प्रशासन है, बताओ ना। नेम प्लेट क्यों नहीं? अगर ये प्रशासन है तो नेम प्लेट आपका पीछे पीछे आगे नहीं लड़की का सर्टिफिकेट है, उसी का प्लेट है ये। बताइए इसको कैमरा में। Viewers, you can see that truck carrying CJP founder Abhijit Deepke and popular actor Prakash Raj along with him. They are moving towards the barricade. Will the Delhi police allow them to march towards Parliament? The police is very unresponsive so far. They have not. Now, will the truck be allowed to pass through? It's a big question. The situation is really escalating in this, and you can see the anger rising. Now, will the protesters be allowed? Situation looks tense here. You can see the truck moving towards the barricades. However, Delhi police has not granted the permission to them so far.
You can see those barricades. भाई एक नहीं मारा है, 5-6 मारे हैं मेरे को इसे। आपको मार पड़ी है? भाई सिर में भी मारा है इन्होंने। कैसे? लाठी चलाई? लाठी मार रहे थे भाई, लाठी मार रहे थे भाई, लाठी मार रहे थे। अभी भाई पुलिस बंदा एक था, एक ही बंदा था, उसने 3-4 बंदों को मारा है। और भाई सबको 4-4 डंडे मारे हैं, यहाँ पे भी मारे हैं बहुत बुरे। छोटे है भाई, मेरे को लाल हो रहा है यहाँ से, सिर में ही मारा है भाई, लाठी चलाई है, लाठी मारी है भाई, सबको मारे हो भाई। और एक ही पुलिस वाला था, सबको मारा है। नाम इनका किसी का कुछ है नहीं भाई, नाम इनका किसी का कुछ है नहीं भाई। You can see the escalating tensions. Now the protesters are moving towards the cops, and now the police seems to be charging towards the protesters. But a human chain has also been formed by the volunteers. Situation is really escalating, viewers, at Delhi's Jantar Mantar. Sir, क्या हुआ? The protesters are moving towards that barricade. The police is stopping them, but the protest does not seem to be stopping anytime soon. So the protesters are breaking the barricades. Oh, the barricades have been broken. The situation is really escalating at Delhi's Jantar Mantar. The barricades have been forcefully. Dramatic visuals from Delhi's Jantar Mantar are coming. Protesters are forcefully removing the barricades. You can see in those visuals, and this is really escalating. But some of the protesters have also accused these police personnel of starting lathi charge at them. While Abhijit Deepke has been asking protesters to remain peaceful, it seems that the situation is snowballing now. Oh. This situation is escalating, and oh bhai, lathi charge. Lathi seems to have started. Lathi seems to have started against the protesters, and you can see behind me. This is really scary. The situation is escalating. Some of the police personnel have started lathi charge to discourage these protesters from moving towards the parliament. Barricades, as you see, have been forcefully removed. But now, to bring the situation under control, some of the police personnel have resorted to lathi charge, and the dramatic visuals have escalated. Dramatic visuals have emerged from Delhi's Jantar Mantar, and you can see the police is erecting those barricades once again in order to prevent these protesters from marching ahead. Viewers, let me reiterate this, that Abhijit Deepke has repeatedly asked protesters to remain peaceful. Some of the volunteers have also formed a human chain in order to prevent any untowering incident from this place. However, some of the protesters forcefully went to that side, removed those barricades, and when police sensed situation snowballing, it started lathi charge to disperse the protesting students. You can see some of the protesters are also injured. भाई क्या हुआ आपको? पुलिस की लाठी से?
कहाँ से रॉक रिकॉर्ड The scary scenes have unfolded on the streets of Delhi. This is the Janpat lane through which you can go to Jantar Mantar, and now the police has started firing tear gas shells. They are also trying to disperse crowd by resorting to lathi charge. You can see the crowd, the young people are running away. The cops are chasing them away. You can see those loud explosions there of the tear gas shells, and they are trying to disperse this crowd which has been gathering since morning. And now the cops seem to have, Delhi police seems to have planned to disperse the crowd at Jantar Mantar. Chaotic scenes have unfolded here. You can see these protesters covering their faces in order to avoid the impact of the tear gas that has been just fired, and it remains to be seen whether the protesters have been allowed to move towards Parliament. However, earlier a scuffle also broke out between protesters and Delhi police. Now you can see these young people out there on Delhi streets. What's happening, bhai? So you were sitting at the place where Sonam Wangchuk was sitting for 30 days, right? We were just sitting there normally. They're sitting there cross-legged, and they came and said, "Lathi charge me, women, little girls, little guys." It's like a tyranny. Is it a democracy? Is it a democracy? You're viewing the live destruction of democracy. Yeah. Okay. So you can see that this is really getting out of hand now. An all-out exchange of hostility seems to have begun. We will speak to a few more protesters to understand what exactly happened here. क्या हो रहा है? बच्चों पे बम फेंके जा रहे हैं, गैस छोड़ी जा रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, शर्म नहीं इनको जरा सी बिल्कुल भी। आप लोगों को परमिशन मिली फिर पार्लियामेंट जाने की? क्या चीज? पार्लियामेंट जाने की परमिशन मिली? परमिशन नहीं मिली। So anger is palpable, and अमेरिका में रह रहे हो हम। we are seeing these protesters are outraging over Delhi police's actions. मैम क्या हो रहा है यहाँ पे? Nobody is responding. बहुत तगड़ा मारे जा रहे हैं. लाठी चार्ज has erupted. Viewers, you can see police resorts to lathi charge once again in order to disperse the crowd, and you can see behind me that these protesters are running away while police advances, and they're also firing tear gas shells. It is getting difficult here to breathe. Eyes are burning. You can see those protesters there almost demolishing the barricades put up by the Delhi police in order to disperse the crowd from all four directions. See this protester is throwing that barricade towards the police, and there the iron barricades are being dismantled, are being demolished by the angry protesters, because tear gas shells have been perpetually fired by the Delhi police on this lane of Janpat. As I told you earlier, crowd is coming from all four corners, and therefore a law and order situation is arising here. You can see the police in large numbers, protesters there throwing chairs, demolishing the barricades. As you can see right here, the police is advancing towards the protesters, and very chaotic, scary scenes are unfolding on Delhi's streets. See those protesters running away as police, and stones. Viewers, stones have been pelted on police by some of the protesters.
this is extremely disturbing scenario on the streets of national capital. It is getting very difficult to breathe because of the tear gases that have been fired. Eyes are burning, and for me as a reporter also it is very difficult to breathe. You can see those protesters right across the street, and those security personnel from Delhi police who are charging these protesters with their batons. जी सर जा रहे see these protesters are once again attacking the protest. Sir media sir media लगी कैमरा पे है। sir you are attacking camera people also. एक second. Sir media personnel are also being attacked. सर हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें क्यों मार रहे हैं? मारिए और मार लीजिए कैमरा को। ये बताता हूँ ना, wait. So in order to chase these protesters away, cops are attacking indiscriminately, and my camera person Shantanu Sinha has also been lathi charged by these protesters. However, he is not injured right now, but this is very unfair for these cops. They should identify that they should let media people do their job. We are merely reporting what's happening in Delhi, on the streets of Delhi, and they are targeting people indiscriminately. भाई सभी साफ कर रहे हैं। देखा जाए तो मीडिया को भी कॉकरोच बोला।